हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग करेंगे जिसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इंग्लिश कम्युनिकेशन में सब्जेक्ट्स और नंबर्स के अकॉर्डिंग कैसे यूज करते हैं, आइए उसको समझते हैं। फर्स्ट हम सिंगुलर नंबर के अकॉर्डिंग समझेंगे। फर्स्ट पर्सन, आई एम रीडिंग। Second person, you are reading. Third person, he is reading. She is reading. It is reading. Ram is reading. अब प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट पर्सन, we are reading. You are reading. They are reading. सबसे पहले अफर्मेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस को समझेंगे। अफर्मेटिव फॉर्म के सेंटेंस का सिंटेक्स होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स: I am teaching the tenses. We are listening to you. You are writing in your note copy. He is reading a story. Sarah is paying attention to what I say. They are sitting quietly. Formation of negative sentences. Subject plus is, am, are plus not plus verb first form plus ing plus object. Examples: I am not teaching you. We are not eating our lunch. You are not going outside. He is not listening to me. She is not cooking food. Ram is not coming home today. Cat is not playing with mouse. In present continuous tense, syntax of interrogative sentences is, am, are plus subject plus verb first form plus ing plus object. आइए एग्जाम्पल्स के बेसिस पर समझते हैं। Am I talking to you? Are we going to play? Are you leaving now? Is he singing loudly? Is Ravi watching the movie? Is she writing the letter? Are they reading the books? Negative interrogative का syntax है is, am, are plus subject plus not plus verb first form plus ing plus object. Let us understand with the help of examples. Am I not coming with you? Are we not eating our dinner? Are you not completing your homework? Is he not telling a lie? Are they not washing their clothes? Isn't Mouse enjoying the song? आइए समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कब यूज करना है। Any action which is happening at the time of speaking, मतलब कोई भी एक्शन बोलते वक्त किया जा रहा है
उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलते हैं। एग्जाम्पल, आई एम टाइपिंग द टेक्स्ट, माउस इज डांसिंग। टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस, पर यह जरूरी नहीं है वो एक्शन बोलते वक्त किया जा रहा हो। एग्जाम्पल्स, he is speaking to someone, laborers are constructing the house। नेक्स्ट, कोई एक्शन जो निश्चित फ्यूचर में डिसाइडेड है, पर इस प्रकार के सेंटेंस में इस बात का ध्यान देना है कि ऐसे सेंटेंसेस में हम टाइम ऑफ एक्शन को भी एक्सप्रेस करेंगे। एग्जाम्पल्स, I am going to Raipur next week. I am playing football tomorrow। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किसी ट्रेंडिंग एक्शन या प्रवृत्ति को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स, द प्राइसेस ऑफ टोमेटोज आर राइजिंग, द इंटरनेट इज बिकमिंग द प्राइमरी सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, इस टेंस का यूज किसी अनएक्सेप्टेबल या अनडिजायरेबल हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स, he is always forgetting his things, they are always laughing at me। Thank you dear students, and keep learning।